नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज JNRKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप धम्बिया जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं इस वक्त हैं नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। So Pradeep ji, finally we've got the better of all the terrorists who were hiding over there in that Anantnag forest, except for a couple who are still there. And the pusillanimity of the Pakistanis is evident again. Unprovoked firing from across the Uri border. अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हों, सऊदी अरेबिया हों, मोस्ट ऑफ दीज MNCs हों, वो सब लोग कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहे हैं साहब, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अब पाकिस्तान का क्या है, किसी भी तरीके से दुनिया को ये दिखाना कि वहाँ पर आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है, स्थिति बहुत अस्थिर है, टू ड्राइव ऑल द इन्वेस्टमेंट अवे फ्रॉम देयर, कि भाई हम तो डूबेंगे सनम, तुमको साथ में ले जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ, जहाँ पर आटे दाल के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, रोटी के पैसे नहीं है, वो ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में जो अमन शांति कायम हुई है उसको किसी भी तरीके से भंग किया जाए। प्रदीप जी। Sir, Pakistan right from the inception never had an ideology what it's going to do. The creation of Pakistan itself is एक भ्रम बना रखा है कि हमने अपने आप को क्रिएट किया। If you are a Muslim country, there are so many other Muslim countries. If it was Islam, there are so many other countries for Islam. And now they never ever invested in business, infrastructure, in education. In education. They never did that. They always was guns for hire. That's and right. All their leaders believed that all the money that is coming in, the FDI was for guns for hire. The FDI was for being mercenaries. And they made money, and now the entire thing is shut up. The tap. You see, when they started, as far as Pakistan is concerned, this is just for the information of our viewers, Pakistan started in 1947. All these people, all the Pakistanis by the way, they lived on the fat of the land, spending the money that all the Hindus and Sikhs and other people who had left Pakistan to go to India had left behind. When that finished, they got into bed with the Americans, decided to project themselves as the bulwark against expanding communism from the Soviet Union. Exactly. And later on, decided to become decided to ride shotgun for the Americans against the Soviets in Afghanistan, and they thought they could do the same thing with the Chinese when they signed the China-Pakistan Economic Corridor Agreement. What they didn't realize was that the Chinese milk nations dry with their huge interest rates and everything else. And when they see, on the contrary, how India has progressed, how India grows from strength to strength, you know what they are like? They are like those street gundas who cannot see all the boys and girls who've been studying very hard, who have got great positions, great marks in the board exams, who have been, selected by all these multinationals and other people and have got great jobs, whereas they have remained behind. So what do? They'll throw stones at you, they'll break your car windows, they will try to eve tease the girls, they'll try to do something like that and make a nuisance of themselves. That's exactly what the Pakistanis are doing. पाकिस्तानी क्या है? पाकिस्तान एसेंशियली एक गुंडा है। वो गुंडा जिसने जिंदगी में आज तक पढ़ाई नहीं करी, जिंदगी में आज तक मेहनत नहीं करी, कभी किसी की सुपारी ले ली, कभी किसी की सुपारी ले ली, कभी किसी से भीख मांग ली, कभी किसी से भीख मांग ली, और अब तो जब भीख भी नहीं मिल रही है तब देखा कि भारत में इतनी प्रगति हो रही है, भारत में इतनी अमन शांति है, भारत में इतना ज्यादा पैसा आ रहा है, तो थोड़े बहुत पत्थर वामी मार दो। ये है पाकिस्तान। Because entire background of all the wars they fought, they have not एक इंच जगह उनका बड़ा नहीं. In fact, they have been destroyed, mutilated and separated into two. They have lost their territory. They lost territories in war instead of gaining anything. प्रदीप जी, ज्यादातर क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। इतिहास में अगर आप इतिहास को देखें, ज्यादातर क्या होता है कि हर देश जो जहां पर सेपरेशन हुआ है, एक माइनॉरिटी जो होती है, मतलब एक छोटे से लोग 20 या 30% लोग जो होते हैं वो मेजॉरिटी से अलग हो जाते हैं। जैसे बॉस्निया हर्जिगोविना में हुआ, जैसे चेक रिपब्लिक में हुआ, चेक रिपब्लिक अलग हो गई, स्लोवेनिया अलग हो गया,
and so on and so forth. मैसेडोनिया हो गया और नॉर्थ मैसेडोनिया अलग हो गया, ऐसा होता है. ये पहली बार है पूरे इतिहास में that a majority has separated itself from the minority. The Bengalis were in the majority and they separated themselves from the minority in West Pakistan. They said we are not Pakistanis, we are Bangladeshis. अब ऐसा है साहब, पाकिस्तान में उस पाकिस्तान के पता नहीं 4 टुकड़े होंगे या 5 टुकड़े होंगे, मुझे मालूम नहीं है. लेकिन what we have to watch out for, and we'll ask our friend Mr. Abhishek Verma, who's there with us at the moment, Mr. Abhishek Mishra, who's there with us at the moment from the BJP, that we have to be very, very vigilant. That vigilance must not come down even for a single day. Abhishek Mishra ji, namaskar. Namaskar. Namaskar, sir. Welcome to Nation Now. Thank you. Abhishek Mishra ji, क्या है कि these kind of incidents which have taken place in Anantnag, in Jammu and Kashmir, I think might even increase because the Pakistanis now are desperate. They need to get the world's attention. They need to show to the world that, hey, listen, Kashmir is still unstable, so don't go there. Don't invest over there. Especially after the success of G20, Chandrayaan 3, Aditya L1, they've gone mad. Their establishment has gone crazy. They don't know what to do. So I hope we will not let our guard down. I hope we shall remain vigilant, and I hope, really and truly, that we are planning some retaliation with regard to the brutal murder of a Colonel Manpreet Singh, Major Ashish, and our Deputy SP, Himayun Faim Bhatt. Abhishek Mishra ji. Ji, the whole nation stands in solidarity with the martyrs who have lost their lives. We all salute them for their bravery. Pakistan has done this dastardly act through its proxies who act as terrorists in Jammu and Kashmir, and these terrorists, our armed forces have dealt with them, and in future also the terrorists will lose in their goal of creating. So, Pakistan today is a failed state. You have to understand the basic fact. Pakistan economically cannot survive, cannot sustain. At the global stage today, no country takes Pakistan seriously. Pakistan is considered a nation which has no, value to the global community. It has no proper democratic structure. It has no foreign policy. It is a terrorist state which should be declared as a officially by the whole global community as a nation which nobody can work with. So Pakistan, in its desperate attempt, because it is a failed state as of today, is attempting to create trouble for us. Yes. So that in the global community there is an image that there is some unrest in Jammu and Kashmir, and hence India and Pakistan are having a trouble. Now Pakistan's only last effort before it dies as a nation is to hyphenate itself with us, so that it can generate some value in the world community. And because it's financer China, so Pakistan is also trying to show China that you keep funding us, keep supporting us, because we can create this terrorist activities for India, Bharat. So this is the real game plan. That their game plan of Pakistan is to create terrorist activities in Bharat, so that China gives them funding and that is the only way they think they can survive today, because Pakistan on all fronts, economic, on the democratic structures, on the way the nation is run, is today an official failed state. And in in maybe few years, it will be officially declared as a failed state by the whole global community. It won't remain a state. Abhishek Mishra ji, it won't remain a state. It will be divided into 5-6 different states. Yes, that's what I'm saying. In a few years, it will be a failed state which will break into 5-6 pieces, because it does not have any institution today. It has no structure today within the country. It has no financial way to run the country. Military is now become the only purpose of that state, and because the military itself also is weakening there, and it cannot fight our nation, a strong army, a brave army,
it is using its last-ditch effort through the terrorist activities. We as a nation will teach them, have already taught them a lesson. They will always fail in their nefarious designs, and very soon, I am sure Pakistan will break as a nation. It will be declared officially, economically a failed nation, and all its plans, and even its masters in Beijing, in China, will not be able to help this country. And again, I am reminding the viewers, the only reason Pakistan is doing these activities is to show itself in good light front of Beijing and Xi Jinping and tell him, let's see if I can create trouble for India, so give me funding. But जी। they will fail. When, मतलब कुछ तो दे दीजिए। and China will also fail. Yeah. मतलब कुछ तो दे दीजिए, जैसे होता है ना सर के आप मतलब पहले जमाने में होता था, कुछ गुंडे आपने हायर कर लिए और कहा कि भाई उधर जाकर के पत्थर वत्थर मार दो, वही कर रहे हैं अभी ये पाकिस्तानी। मतलब इधर हिंदुस्तान में पत्थर मार दीजिए और हमें कुछ पैसे दे दीजिए, कहने का मतलब ये हुआ। तो गुंडे भी नहीं है ये गुंडे भी नहीं है, ये बेसिकली जो है मर्सनरी गुंडे तो वो होते हैं कि जो अपने मन में जो आते करते हैं। ये बेसिकली पेड मर्सनरीज हैं बीजिंग के, चाइना के, शी जिनपिंग के। वहां से पैसा आता है इनको कि आप भारत को तंग कीजिए, और इसीलिए ये पाकिस्तान से भेजे हुए आतंकवादी ये लोग आके भारत को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। हमेशा ये विफल हो जाते हैं। और अभिषेक मिश्रा जी यहाँ पर क्या हो रहा है कि काफी जगह से, एंड आई पर्सनली आल्सो एम ऑफ दैट ओपिनियन, हर जगह से डिमांड आ रही है, और उसके पहले भारतीय जनता पार्टी वाज आल्सो ऑफ दैट ओपिनियन काफी साल पहले, कि भाई इनके साथ जो है कोई हमें टर्म्स रखने ही नहीं चाहिए। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, देखिए साहब, ट्रेड इन्होंने बैन किया हमारे साथ, हमने तो बैन नहीं किया, इन्होंने बंद कर दिया था ट्रेड पाकिस्तानियों ने। अब डिमांड ये आ रही है बाकी जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं कि भाई इनके साथ क्रिकेट विकेट खेलना बंद कर दीजिए। ये जो हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कभी कभी उल्टी सीधी चीज़ें मतलब मिल जाते हैं। खैर आजकल जो पहले बाइलैटरल किस्म की टाइज थी वो तो नहीं है, अब ये भी आ रहा है कि जो मल्टीलैटरल टूर्नामेंट जो हैं, जैसे आईसीसी की टूर्नामेंट वगैरह, वहां पर भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। आपकी क्या राय है इसमें अभिषेक मिश्रा जी? देखिए इसमें मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ये बीजेपी का विषय नहीं है, ये बीसीसीआई और ये सब बॉडीज, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इसमें तय करेगा। जी। और दूसरी बात है कि कई बार क्या होता है, इंटरनेशनल जो प्रतियोगिताएं होती है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में आप तो मैं वही कह रहा हूँ कि इस पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा भाजपा के प्रवक्ता के नाते। ये बेसिकली बीसीसीआई, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का विषय है, होम मिनिस्ट्री का विषय है। और लेकिन परंतु एक बात है, जो देश पाकिस्तान अपने लोगों को भोजन नहीं दे सकता, वो अभी स्पोर्ट्स में कहीं आए जाए, ये बात समझ में नहीं आती। वो अपने देश में लोग भूखे मर रहे हैं पाकिस्तान में, उनके रोटी नहीं, चावल नहीं, सब्जी नहीं, खाना नहीं, तो वो क्या स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे, मेरे समझ से बाहर है। मुझे तो लगता है कि आई थिंक 1-2 वर्षों में इनके जो टीम प्लेयर्स हैं, अच्छा कल ही न्यूज आया था कि जो उनका इंटरनेशनल एयरलाइंस है PIA, वो बंद होने वाला है। जी, बंद होने वाला है, बंद होने वाली है, स्वयं बंद हो जाएगा। करेक्ट। और अपने आप ये लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेंगे। Sir, there is one thing which is very, all strategic analysts right from the beginning have said, and by the way, this is absolutely true also. All nations have an army. In Pakistan, an army owns a nation. Yes, you are right. पाकिस्तान के लिए अलग है। Yes. वो मालिक हैं पाकिस्तान के। प्रदीप जी, अभिषेक मिश्रा जी, बीजेपी का कहना है कि घमंडिया गठबंधन जिस तरह से सिलेक्टिव बॉयकॉट ऑफ मीडिया, ये गलत है। सिलेक्टिव बॉयकॉट ऑफ मीडिया बाय घमंडिया गठबंधन इज रॉन्ग। They are saying, is Rahul Gandhi following the emergency kind of thing जो grandma इंदिरा गांधी ने किए थे, क्या इनका याद दिला रहा है कुछ आज? How do you see the selective boycott of media by the Congress? We have never seen this earlier. Never. कोई इंडियन अलायंस या कोई never. अलायंस बोल रहा है कि हमने इन एंकर्स को boycott दिया, इन न्यूज चैनल्स को बॉयकॉट कर दिया। न्यूज चैनल नहीं प्रदीप जी, वो ऐसे न्यूज चैनल का नाम नहीं है। सेलेक्टिव एंकर्स को किस प्रकार से बॉयकॉट कर रहा? हाउ डू यू सी दैट अभिषेक मिश्रा जी? कांग्रेस पार्टी इज ट्राइंग टू put fear among these news anchors and is trying to give a message that if you speak against their political party and their alliance, that they will be boycotted. So this is a very deplorable move. This is anti-democracy. This Ghamandiya alliance, which claims that they are here to fight for democracy, has itself, destroyed democratic values by this notification of boycott.
See, Indira Gandhi had done a similar thing where India free press had been, there was no free press during the emergency. Now the Ghamandiya alliance has shown the first step towards their dictatorial schemes, wherein they have said that 14 journalists we will boycott. Journalists are not to be boycotted. You answer their questions, whatever is your view you put forth. The journalist has a right in a democratic country to express his views, to have his own view of whatever is happening. But Ghamandiya Alliance is trying to give a chilling message to all journalists that if you do not follow our agenda, if you do not support the Ghamandiya Alliance, basically, I'll explain to you, Pradeep ji. Ghamandiya Alliance is basically giving a message that if you do not support this Ghamandiya Alliance, we will boycott you. Basically, they are saying either you are with us or we will destroy you, finish you. This is a humiliating message to journalists. Journalists across the country must, they must be against this. They must. और अभिषेक मिश्रा जी, अमित शाह जी ने आज फिर इस चीज को हाईलाइट कर दिया कि ये गठबंधन गठबंधन सनातन धर्म विरोधी है. All the BJP has been raising this. Now this is a very embarrassing thing for the Congress. What will the Congress do? Congress out of frustration, कमलनाथ ने आज कहा कि जूनियर स्टालिन ने जो बोला गलत है. सनातन धर्म इस पूरे देश का परंपरा है and 90% of people are following it. We don't agree with it. This is the first time Congress leader is coming out strongly against DMK's junior Stalin. For what? Now how do you see this? क्या ये आगे जाकर एक बहुत बड़ा इलेक्शन का मुद्दा 2024 तक पहुंच जाएगा? Because ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है. ये भारत की संस्कृति का मुद्दा है. ये भारत के लोगों की आस्था का मुद्दा है. ये बात स्पष्ट है. आप मध्य प्रदेश में कुछ और बोले और आपका ही अलायंस पार्टनर तमिलनाडु में भारत की संस्कृति सनातन धर्म के विरुद्ध बोले, ये नहीं चलेगा. ये घमंडी अलायंस का ढोंग है. ये कांग्रेस पार्टी का ढोंग है. आप समझिए, अगर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे उस सत्ता की लालच में केवल वोट प्राप्त करने के लिए, लोकसभा में सांसद प्राप्त करने के लिए अगर इस डीएमके के साथ बना हुआ है तमिलनाडु में, इसका अर्थ है कि डीएमके का जो घातक विचार है, देशद्रोही विचार है, भारत के संस्कृति के खिलाफ जो विचार है, कि जो डीएमके के नेता ने, जो उनका वारिस है उदयनिधि स्टालिन, वो कह रहा है कि सनातन धर्म को मिटा देना चाहिए. सनातन धर्म एक बीमारी है. अरे भारत के संविधान में, जब संविधान को आप देखोगे तो प्रभु श्री राम और माँ सीता का चित्र है वहां पे. आप राइट ऑन द फ्रंट पेज, सबसे पहले आजादी दिलाई, वो भगवान राम का नाम लेते थे 24 घंटा. ये उदयनिधि स्टालिन और राहुल गांधी, ये सोनिया गांधी, ये देशद्रोही विचार से ग्रसित है. ये लोग वो लोग हैं जिनके मन में एक ही विचार है कि भारत का बुरा कैसे हो. और मैं ये बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, ये राहुल गांधी, उदयनिधि स्टालिन, इनका मंशा सही नहीं है. ये इस प्रकार के विचार समाज में फैलाना चाहते हैं जिससे देश दुर्बल हो. मुझे तो लगता है ये चीन की मदद करना चाहते हैं कि भारत के अंदर विभाजन हो जाए जिससे चीन को लाभ हो जाए. राहुल गांधी हमेशा चीन के पास जाते रहते हैं. इसीलिए इसमें बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा. पूरे देश की जनता को जागृत होना पड़ेगा और घमंडिया अलायंस को और कांग्रेस पार्टी और उसके बाकी सभी सपोर्टर्स को पूरी तरह बहिष्कार करना पड़ेगा. इन्होंने 1 लाख वर्षों से चले आ रहे सनातन धर्म पे प्रहार करके, जो अंग्रेज भी नहीं कर पाए, जो मुगल भी नहीं कर पाए, ये भारत में आजादी के बाद ये प्रहार इसलिए कर रहे हैं कि किस तरह भारत को कमजोर किया जाए. लेकिन ये भूल गए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है. भारत ना कमजोर होगा, ना इस देश की जनता इनके चालों को समझती है. राहुल गांधी देशद्रोही जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, वही व्यक्ति के साथ बैठने वाला, उसका सपोर्टर, उसका एलाई, वो बोल रहा है कि मैं इस देश से सनातन धर्म को मिटा दूंगा. बीमारी है सनातन धर्म. और यही राहुल गांधी जनेऊ पहनता है, यही राहुल गांधी मंदिर जाता है चुनाव के वक्त वोट मांगने के लिए. राहुल गांधी से मेरा सवाल है, आप चुनाव के वक्त जनेऊ पहनते हो और वोट के लिए आपका ही जो सपोर्टर अलायंस पार्टनर तमिलनाडु में कहता है कि मैं धर्म को मिटा दूंगा, सनातन धर्म, हिंदू धर्म को मिटा दूंगा. ये बहुत बड़ा विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं है. लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ अभिषेक मिश्रा जी, बुरा कर रहे हैं. अभिषेक मिश्रा जी, ये तो आपने कहा कि उनके जो अलायंस पार्टनर है उन्होंने कहा है. अरे भाई, आप भूल गए कार्ति चिदम्बरम साहब ने बिल्कुल समर्थन किया उनका. कार्ति चिदम्बरम साहब जो कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तमिलनाडु से,
जो उदयनिधि मारन साहब ने बात करी है उसी बात को उन्होंने दोहराया है। और तो और छोड़िए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के जो सुपुत्र हैं उन्होंने भी कहा है कि उदयनिधि मारन ने कोई गलत बात नहीं कही है। इनफैक्ट तो मैंने कहा कि राहुल गांधी ये करवा रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ। अरे खड़गे भी बोलेंगे, चिदम्बरम भी बोलेंगे, ये राहुल गांधी ने सुपारी ली है देश तोड़ने की, देश को विभाजन करने की विदेश से। राहुल गांधी का लक्ष्य क्या है कि साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, इस तरह से देश का बंटवारा किया जाए। वो बार बार यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहते हैं? वो चाहते हैं कि भारत की एकता खत्म हो, सनातन धर्म की शक्ति खत्म हो, और इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स यूनियन ऑफ स्टेट पे फोकस करा के किसी तरह। ये लोग देश के लिए अच्छे नहीं है। भारत की जनता को समझना चाहिए, ये जानबूझ के एक नियोजित साजिश के तहत इस देश को बर्बाद और देश को कमजोर करने का प्रयास है। राहुल गांधी, उदयनिधि स्टैलिन, ये सब मिले हुए ये लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं, भारत को कमजोर करना चाहते हैं, ये चीन को मजबूत बनाना चाहते हैं। और वही कुछ बात शायद समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेताओं ने कही है अभी रिसेंटली। उन्होंने तो इनफैक्ट ये भी ऑब्जेक्ट किया है कि माथे के ऊपर तिलक क्यों लगाते हो। मतलब ये क्या है यार? नहीं, आज के बाद राहुल गांधी इसलिए, या तो राहुल गांधी डीएमके से गठबंधन तोड़े, या राहुल गांधी जीवन में कभी मंदिर ना जाए, जनेऊ ना पहने और तिलक ना लगाए। मगर मिश्रा जी, अभिषेक मिश्रा जी, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अभी मैं भगवत गीता पढ़ने लगा हूं और उपनिषद पढ़ने लगा हूं, और भगवत गीता और उपनिषद से राहुल गांधी को ज्ञान प्राप्त हुआ है कि जो हिंदुत्व बीजेपी प्रैक्टिस कर रहा है, बीजेपी एंड आरएसएस का जो हिंदुत्व है और जो पुराण में हिंदुत्व लिखा जो राहुल गांधी जी पढ़ रहे हैं, बोले जमीन आसमान का फर्क है। बीजेपी और आरएसएस का नफरत के हिंदुत्व है, दूसरों को ठेस पहुंचाने वाले हिंदुत्व है। बोले कि मैं आगे जाके उन्होंने डिवाइड करके बोले कि मैं गांधी इंडिया में बिलीव करता हूं, ना कि गोडसे की इंडिया में। ना राहुल गांधी जी का ये भगवत गीता और उपनिषद का पढ़ना कैसे देखते हो आप? देखिए, ये पूरा झूठ है, ये ड्रामा है। स्टालिन कहता है कि सनातन धर्म को मिटा देना चाहिए, सनातन धर्म का आधार है भगवत गीता। अच्छा, महात्मा गांधी जी कहते थे कि भगवत गीता से मुझे शक्ति प्राप्त होती है, और ये लोग अब महात्मा गांधी ये कहते हैं अब मैं गांधी जी से प्रेरित हूँ। पूरा विरोधाभास। देखो, ये लोग वो लोग हैं जो फॉरेन जाते हैं, वहां से प्लानिंग बनाते हैं, वहां से फंडिंग पाते हैं। ये कांग्रेस, राहुल गांधी, घमंडी अलायंस के लोग, और ये लोग देश में आके देश कमजोर करना, मोदी जी की सरकार को कमजोर करने की साजिशें रचते हैं। ये महात्मा गांधी भगवत गीता का नाम लेके अपने देश की जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास करते हैं, जबकि इनके मन में ना धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति कोई आस्था नहीं है। नहीं तो राहुल गांधी ने क्यों नहीं तोड़ा डीएमके से गठबंधन? उसी क्षण तोड़ देना चाहिए था कि उदयनिधि स्टैलिन, मैं भगवत गीता को मानता हूं, तू सनातन धर्म को मिटाना चाहता है, आज से तेरे मेरे बीच कोई बात नहीं हो सकती, हमारा कोई गठबंधन नहीं हो सकता। तो राहुल गांधी भगवत गीता और महात्मा गांधी का नाम लेके, जो महात्मा गांधी 24 घंटा भगवत गीता और राम नाम का नाम जपते थे, उसी सनातन धर्म के खिलाफ ये बोल रहे हैं। ये राहुल गांधी का ढोंग है, और देश की जनता अब मुझे लगता है देशद्रोह का काम इन्होंने किया है घमंडी अलायंस वालों ने, और अब कोई सख्त कार्रवाई इन पे होनी चाहिए। लेकिन अभिषेक मिश्रा जी, आप बताएं, मैं व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछता हूं कि इस वक्त उदयनिधि स्टालिन साहब को ये कहने की जरूरत क्या पड़ गई? क्या हो गया? मतलब नहीं, व्हाट इज द प्रोवोकेशन? प्रोवोकेशन क्या है? नहीं, प्रोवोकेशन नहीं है, ये साजिश है। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रदीप जी। From the international level, there is a strong conspiracy to weaken and destroy and harm our national interest. And Rahul Gandhi, Ghamandiya Alliance, all these people are part of the international conspiracy. They are getting ideas and funding, and there is a huge network which wants to harm India. उसमें बीजिंग के लोग, चाइना के लोग भी शामिल है, कुछ यूरोपियन लोग शामिल है। They are saying that you weaken India, you destroy India's civilizational values, you destroy India's the main thing to sustain us, the Sanatan Dharma. And that is why the attack is being made on Sanatan Dharma, so that India gets weakened, and there is a strife in the country. There is some kind of things get in a very negative light, and whereby India gets weakened. There is a division in this country, and which will benefit Xi Jinping and China. This is a very dangerous conspiracy, which these people are doing, the Rahul Gandhi and Ghamandi Alliance people, and try to understand what is their base motive. If you see Rahul Gandhi's statements, I am repeating this, he always keeps saying that India is union of state. What is he trying to imply? He is trying to imply that Bharat is not a civilizational country. Bharat is Sanatan Dharma. It is not a country united by Sanatan Dharma. It is merely a union of states, and their plan, their agenda is to create division in this country. I don't want to go further on this.
but you have to try to understand what I'm trying to imply. Abhishek Mishra ji, This is not a provocation. This is a part of an international conspiracy against our nation, against our exactly. It seems to be. And Abhishek Mishra ji, now the polls starting in election, जो पांच state, Congress believes that they're going to sweep 5 states आने वाले चुनाव में, state elections. Now in MP they have already 11 वचन था, already declare कर दिया, गैस 500 रुपया, 100 unit free, फिर 100 women 1500 old pension scheme चालू हो जाएगा, backward caste reservation 27%, 27%, किसान कर्ज माफ. So, no, the schemes have already started. They said this Jan Kalyan, Garib Kalyan schemes won them Karnataka. बोले कि कर्नाटका बीजेपी इस कदर से हारे हैं कि आज तक बीजेपी ने वहां पर ऑपोजिशन लीडर अपॉइंट नहीं किया है. कौन है ऑपोजिशन लीडर? The way you say that India Alliance का कन्वेनर कौन है? प्राइम मिनिस्टर कैन. They are saying where is the opposition leader in Karnataka? So what is the BJP so badly stuck in Karnataka that they can't see beyond कि अपने एक opposition leader को भी अपॉइंट नहीं किया वहां पर? What is going on there? Vishwa ji. Yeah, Pradeep ji, if you remember, for almost 2 years, Congress had an interim president. Congress party अपने पार्टी का अध्यक्ष नहीं चुन पाया. So the party which cannot even choose a national boss for itself, a president for itself, should not comment upon a state level matter in Karnataka. So first of all, this is a non-issue. Many a time political parties have lot of different things to focus upon, and organizationally there will be some decision made very soon in Karnataka. I think that is not just as Congress kept Sonia Gandhi interim president for 2 years. So Congress on what ground it is asking us about? Only 5 months have happened. I think 4 months in fact. May was the result. June, July, August, September. So it's only 3.5, 4 months in Karnataka. सोनिया गांधी ने 2 साल तक रही इंटरिम प्रेसिडेंट, को प्रेसिडेंट नहीं था. हमारा 4 ही महीना हुआ. We'll find the leader of the nation. That is not a big issue. And with regards to the 5 state elections, you have to understand that Congress as a party has no agenda, it has no ideology. As of today, it is working against the national interest, it is working for Beijing to harm India. And such a party, I believe that eventually the voters will see that Congress party and Gamandiya alliance is not an alternative to the nationalistic, patriotic, development-oriented government of Narendra Modi ji. So, I am absolutely firm and certain that Bharatiya Janata Party will form the government in the 5 states. I am absolutely convinced that people of these 5 states will repose their faith in Modi ji. Rahul Gandhi today is working on the directions of China. Such a man, there should in fact be an inquiry against him. And why is he again and again giving statements which are weakening India? Why his alliance partners are trying to create discord and enmity within India? Why are they working in an agenda, a planned agenda, to show India in a poor light? So I don't see that Congress party getting any traction in these 5 state elections. Modi ji's goodwill, Modi ji's development, Modi ji's work will ensure Bharatiya Janata Party gets majority in the 5 states. Abhishek Mishra ji, this is somewhat similar to a discussion that we had with lots and lots of BJP leaders and spokespersons before the Karnataka elections. Don't you think you're underestimating the Congress and its allies? Because something similar was discussed before the Karnataka elections, and the BJP was caught napping effectively. That the entire GDS vote shifted to the Congress. The BJP was not able to preempt it. See, Karnataka, Rajiv Bajaj ji, there was a technical issue. If you remember, Basavaraj Bommai, our chief minister, had accepted defeat. He said the defeat is due to him. Now there was the issue in Karnataka, which people have not understood because I had gone there. So I am telling you the actual reason what happened. Basavaraj Bommai, he was not very popular in Karnataka, and Siddharamaiah had more popularity than Basavaraj Bommai, and that is the one reason when the last moment voters decided instead of Bommai we want Siddharamaiah chief minister. It was not a victory of Congress party. Basavaraj Bommai, our chief minister, has accepted this, that the defeat was due to him. What happened was, it was not that Congress won and BJP lost. It was basically between Basavaraj Bommai and Siddharamaiah, people felt they wanted to give chance to Siddharamaiah. And because Bommai did not have that popularity, the voters felt finally chief minister, we have to vote to elect a CM. We will elect Siddharamaiah.
that is exactly what happened in Karnataka. Congress is trying to make it out into, as if some their issues of cylinder or something worked. That's false. I was in Karnataka. I'm aware. But don't you exactly think something similar will happen in Rajasthan? No. Because in Rajasthan, who is the person in front? Rajasthan में बीजेपी से कौन है In सर? Rajasthan, Madhya Pradesh, our leaders, our prime leaders are very popular. Shivraj ji is popular. Vasundhara ji is very popular in Rajasthan. In Chhattisgarh. सर वसुंधरा जी की बात सर क्या बोल रहे हो अभिषेक मिश्रा जी? आपके पार्टी के लोग क्या क्या बोलते हैं वसुंधरा जी के बारे में प्राइवेट में? आपको भी मालूम है सर? Leader in Rajasthan, she is very popular. सर चलिए I hope you are right. That's the only thing I can say. But what about छत्तीसगढ़? आजकल डॉक्टर रमन सिंह तो कहीं दिखते ही नहीं है सर, बताएं ना. In Chhattisgarh, our organization is working at the ground level to strengthen itself, so that it has always worked at the ground level. We can give a fight to begin. Sir, it has always been there. इसमें कोई दो राय नहीं है. Right from the time when Chhattisgarh was part of the central provinces, later on it became Madhya Pradesh. वहाँ पर भारतीय जनसंघ बहुत स्ट्रांग रही है. अभी भी बीजेपी स्ट्रांग है, ऐसी बात नहीं है. और अगर मार्जिन ऑफ विक्ट्री भी आप देखें कांग्रेस की पिछली बार भी बहुत कम थी. कहीं 500 सीट से कोई 500 वोट से कोई जीत के आ रहा है, कहीं 750 से. वहाँ पे मार्जिन ऑफ विक्ट्री ऐसी रहती है. सो इट कैन बी हिट और मिस. लेकिन जहाँ तक राजस्थान का सवाल है और मध्य प्रदेश, इन मध्य प्रदेश, लेट मी टेल यू, दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, आई मे बी कंप्लीटली रॉन्ग. ऑल आई एम सेइंग इज पीपल आर काइंड ऑफ बोर्ड ऑफ शिवराज सिंह चौहान जी. बड़े मतलब वो बोरिंग हो गए मामा जी. आई एम नॉट जोकिंग. तो आप, आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉट दैट रिपोर्ट टू. अभिषेक मिश्रा जी, देखिए, I cannot comment. You are a journalist. You can call it boring or something. What I will say. no, I am not commenting, sir. This is what I got from the people. What I'm saying is, you have the right. See, Yes. we are not a Ghamandiya alliance. That we will say that ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इनको बहिष्कार. मैं कह रहा हूँ आपका अधिकार है. आपके पास रिपोर्ट्स आए होंगे, आप बोल सकते हैं. मैं कुछ और कह रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ शिवराज सिंह चौहान has given a very good administration in Madhya Pradesh. There is law and order in Madhya Pradesh. There is development in Madhya Pradesh. Girls, women are benefited through various schemes in Madhya Pradesh. Schooling has improved, education has improved, health has improved. So eventually, when the voter votes on development, he will vote for the Bharatiya Janata Party. Of that, I am very convinced. And what about Telangana, sir? And Congress does not have a credible alternative in Madhya Pradesh. As Kamal Nath, he is known as a fixer, which everybody knows in Delhi and across the country. So people in Madhya Pradesh know that Kamal Nath आएंगे deal करें. And such dealers are not required right now. So Amit Shah calls on corruption now. Right now the time to make India a developed country. In making developed country, hard workers like Shivraj ji are required. But dealers and fixers like Kamal Nath, Mr. 10, याद है वो जो नीरा राजा टेप में आया था, Mr. he takes bribe of 10% on every deal, Kamal Nath. But you know, has head थे तरुण दास. लेकिन सर उसमें बीजेपी के भी लोगों का नाम था सर. नीरा राडिया की टेप तो छोड़ दीजिए, कौन ऐसा बंदा जिसका नाम नहीं था उसमें. लेकिन नहीं, कमलनाथ जी, मैं आपको बता दूं, शिवराज जी करते हैं हार्ड वर्क और ये कमलनाथ करते हैं मिस्टर 10%. अब मतलब मध्य प्रदेश का भला कौन करेगा? शिवराज जी तो करेंगे ना. 50% आप पे है मिश्रा जी, 50% करप्शन चार्जेस आप पे है मध्य प्रदेश में. आपने नहीं वो आप हर जिले में करा रही है. लेकिन ये सीआईआई जैसी संस्था के हेड तरुण दास ने कहा था कि ये कमलनाथ हर चीज में 10% का घोटाला करता है. सिर्फ 10% बोला था, फिक्सर बोला. सर, I think Mr. Kamalnath should feel insulted. If I know Kamalnath, he should feel insulted. कि यार बाकी 40% कहाँ हैं? What do you mean by 10%? सर, अच्छा चलते चलते आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि भाई चलिए ये तो बात कमलनाथ जी की हो गई, शिवराज सिंह चौहान साहब की होगी, मध्य प्रदेश की होगी. यहाँ पे क्या क्लियर कट फाइट है कांग्रेस और आपके बीच में? तेलंगाना में ट्रायंगुलर फाइट होने वाली है, बीजेपी कांग्रेस वर्सेस बीआरएस केसीआर. उसके बारे में चलते चलते जरा बताते हुए जाएं सर. देखिए, तेलंगाना में द फैक्ट इज दैट केसीआर हैज लॉस्ट पॉपुलैरिटी अमंग द पीपल because of nepotism, because of promoting his own family, and also his daughter is involved in a bribery case where Delhi Aam Aadmi Party, that liquor scam, yes, yeah, liquor scam. So KCR as a politician has lost all credibility in front of the people. With regards to the Congress party, Rahul Gandhi, being a failed leader, will ensure that Congress party in Telangana is not able to go ahead at all. So only BJP is the party which is today increasing its foothold in Telangana. And sir, but Mr. KCR is accused. But Mr. KCR is accused the Congress of having had a secret deal with the BJP. With the BJP, yes. You know, my question is,
why will BJP, why will we do a deal with him? Today in Telangana, in every district, in every village, in every city of Telangana, our worker base is increasing. Our support base is increasing among the people. KCR is a finished political entity. I want to ask you, as Sonia Gandhi is out writing letters to Prime Minister Modi, is Sonia Gandhi on the field now? She is setting the agenda. She said, if you don't have an agenda for the special parliament session, Mr. Modi, I am through this letter giving you an agenda. Now this agenda could be the entire agenda, Mishraji, till 2024. She says price rise is an agenda, unemployment, falling incomes, farmers issues, MSME shutdown, clean chit to China on border issues, Modani scam, Manipur constitutional breakdown. Now Sonia Gandhi ji has set the agenda, Abhishek Mishra ji. How are you going to take on that? She is ready. She is on the field everywhere now. Sonia Gandhi is forced to do this drama because Kharge, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, they have no idea what to do because they have seen the Modi ji's work, development work, and they have no way of doing anything to get any support from people of India. So that Sonia ji at her age, when she's sick also, has to be active because the party president Kharge is a failure, Rahul Gandhi is a failure, Priyanka Gandhi is a failure. So in fact, I have deep sympathies with Sonia Gandhi that she has to be active because Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi and Kharge, this team has failed. So Sonia ji, whatever she is writing to Prime Minister is an act of desperation. Basically, she is afraid that the Congress party is a dying party. She is afraid Rahul Gandhi is a failed leader. She is afraid that Priyanka Gandhi is over-ambitious. She is frightened that Mallikarjun Kharge cannot take the Congress party along. So, in such conditions, Sonia ji, out of desperation, is writing these letters. She has a right to write the letters because this is a democracy. So right, I agree with you, Abhishek Mishra ji. But the only thing is, I am very surprised. In fact, I am shocked because I have been a journalist for a long time. I have never seen any party anywhere boycott journalists. भाई पार्टीज का बॉयकॉट कभी कभी जर्नलिस्ट करते हैं एंड देट टू आई हैव ऑलवेज अपोज्ड इट कि भाई अगर कोई लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टी है उसको आप देखिए साहब डेमोक्रेसी में किसी का बॉयकॉट नहीं होता है सीधी सादी बात है बट टू डू दिस आई थिंक इज एब्सोल्युटली नॉट डन आई एग्री विद यू दैट दिस मैक्स ऑफ इंटॉलरेंस आप कहते हैं कि आप इंटॉलरेंस के खिलाफ लड़ रहे हैं तो आप किसी जर्नलिस्ट को आप मतलब कैसे कर सकते हैं हाँ अगर आपको बॉयकॉट करना है इन एनी इवेंट जर्नलिस्ट और एडिटर और न्यूज एंकर इज नॉट अ फ्री एजेंट यू आर वर्किंग फॉर समबडी आप मालिकों को बॉयकॉट करो ना भाई बॉयकॉटिंग द पुअर एंकर्स ही इज जस्ट डूइंग अ जॉब इज गेटिंग अ सैलरी यार मतलब उसको आप बॉयकॉट कर रहे हैं ये जितने मालिक हैं अपने कॉर्पोरेट मीडिया चैनल्स के अगर आपको लगता है कि वो अनफेयर हो रहे हैं तो उनको बॉयकॉट कीजिए दिस इज वेरी स्ट्रेंज आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेनेवर यू हैव द टाइम अभिषेक मिश्रा जी आई वुड लाइक टू हैव अ फुल डिस्कशन विद यू ऑन प्रेस फ्रीडम्स इन इंडिया इट विल बी नाइस प्लीज I agree. Please. Thank you so much. One line. I'll give you the one line. Please. The purpose of this boycott by the Ghamandiya Alliance is very simple and clear. They want to frighten the journalists that if you do not support this alliance, we are going to boycott you. And they want to break the democratic values for the last 75 years, where journalists were free to ask questions. What the Ghamandiya Alliance is saying is, there is no more questions allowed now. Just blindly support us. And that is not what happens in democracy. So this authoritarian, this anti-democratic alliance, Ghamandiya Alliance, a new version of the East India Company, come to loot this country, is saying that you cannot report on us. Let us loot. So this loot, they want to loot the nation once again. See, they were the UPA. Now they have come in the new avatar as Ghamandiya Alliance, and they want to again loot. So now the journalists are the ones who will write about the loot. And see, understand one thing. Rahul Gandhi in one personal interview had said कि मैं मीडिया से नाराज हूँ मीडिया ने हमें एक्सपोज किया 2012 से 14 में सरकार चली गई तो राहुल गांधी इज एंटी मीडिया ही हेट्स मीडिया but he feels media was the one which exposes all the bribe corruption happening. So this Ghamandiya Alliance has given a signal that we will destroy journalists in India. And I think all journalists must be united right now against the Ghamandiya Alliance against Rahul. Well, all journalists have written. All journalists have written. Everybody is protested. Globally. Listen, Pradeep, Rajiv ji. The funny part, this Rahul Gandhi goes and lectures globally that the freedom values, press values in India are declining under Modi ji.
funny part is he aligns himself with boycotting journalists. This man is such a double-faced man, Rahul Gandhi. He must Right, be- thank you so much, sir. Abhishek Mishra ji, we really have run out of time. It's a great pleasure talking to you, but I do hope we do something about Pakistan. I hope some retaliation takes place because people are expecting Bharat Mr. Mata Modi ki to do it. Thank you, sir. Bharat Mata ki jai, sir. Jai Hind.